फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello, everyone. Welcome to Cricket Next. I am struggling to take words out of my mouth because I've just witnessed a thriller. What a thriller in this IPL 2024. It's just the third game. Can you believe it? Just the third game, and you've seen such an interesting thriller. After making 208 runs, KKR, who would have thought that SRH will inch so close? SRH needed around 30 runs in the last 3 overs, and they made their equations right, they calculated everything right, and then they eventually just made a target for themselves, needing 13 of the final over. But kudos to Harshit Rana. The way he held his nerves, he truly deserves the credit. But more than that, I would love to praise Heinrich Klassen for what he has done. Absolutely great innings by Heinrich Klassen, but at the end of the day, result is what all matters. KKR have got 2 points now. You saw the visual on screen. They were celebrating out there, but there was one moment where Shreyas Iyer got pale and he was thinking, what if they lose this match? Well, it was so interesting, and it was a great thriller. And let's not waste any time and bring in Taos Rizvi and Animesh Nath and hear it out from them what they were feeling. Taos, I was jumping, with each and every six that Henrik Klassen was smashing, and I think it was outstanding. I really don't have words. I started out this live session with the same thing. I really can't figure out words because what I saw from Klassen, and at the end of the day, seeing SRH on the losing side, it actually pains. What were your emotions at the time you saw 30 needed of the last three, and then 13 of the last over, and eventually KKR winning it up? Absolutely. I mean, I never thought that SRH would go on to, so close, considering the total. 208 is quite a huge total, especially. But credit to the Eden Garden wicket. Beautiful wicket. But I'm surprised with the way the 24 crore boy, the way he went about. Heinrich Klassen just went after him. Just it was pure entertainment, completely pure entertainment. I simply enjoyed, but I never thought the match would go so deeper, considering the way this guy was playing, Heinrich Klassen. It went straight into the last over. But credit to this guy, Harshit Rana, the youngster. I mean, having seen Mitchell Stark going for runs, Harshit Rana coming out with that last over, completely contrasting. I mean, nobody expected that KKR would lose and would win this game the way Heinrich Klassen was taking it away. But yeah, Shreyas Iyer, I was like, come on, it's not. This must be something, finally a good opportunity for to start an IPL season, not as a batter, maybe as a captain. The way his Ranji Trophy and the way his contract has gone away from him, this was something like a saving grace for him. At least a good start in this season for Shreyas Iyer. But I would say, I mean, before the match, there was some controversy related to the wicket. So the curator was not really keen on doling out wicket that KKR wanted, maybe a spin track. But it at the end of the day, he dished out a beautiful batting track, which how it should be in T20 cricket. I love to watch a batting on in T20 cricket. So exactly a beautiful pot boiler at the start of the IPL second day of the IPL season. Lovely, and I would like to see more matches like this. Yeah, Taos, I was just reading it somewhere that it's just the third game of IPL, and already 56's mark has been crossed, which means that it's, fiery. This season is so fiery. And one of the fires that we saw was from Andre Russell's bat, 64 he made. And, after the wickets, the early wickets that KKR, uh, in fact, to be honest, the way Shreyas Iyer played, the way Narayan played, nobody worked out for KKR. Venkatesh Iyer, you see over there, then Nitish Rana.
nobody worked out. So the way KKR started the innings, nobody had thought that they'll cross that 200 mark. But then it all went to Andre Russell, the way he batted Animesh. Obviously, Andre Russell ने जिस तरीके से खेला है वो ही एक difference create करेगा. But I won't even call it the difference because जिस तरह से Henrik Klassen ने किया था, it was equivalent to what Russell played. 64 and 63. It's just a one-run difference between Russell and Klassen. Harshit Rana was the key difference between the two teams because he held his nerves. But to be honest, I think Russell is the one game changer for KKR this season. But कब तक, ये एक बड़ा सवाल है. जब आपके टॉप के बैटर्स नहीं काम कर रहे हैं आज, तो दे कैन एंजॉय, बट दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, इजंट इट? यही बात मैंने आपसे मैच प्रीव्यू में भी कही थी कि केकेआर की प्रॉब्लम यही है. वहां पे थोड़ा सा ही सफल हुआ कि मेरा भरोसा ज्यादा वेंकटेश अय्यर पे था और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ फिल शॉट से संभाली. बाकी सारी चीजें लगभग लगभग सेम रही. टॉप ऑर्डर उसी तरीके से फेल हुआ. श्रेयस अय्यर की वो लगातार फॉर्म जारी रही. जो रजत पाटीदार के साथ कहीं ना कहीं हो रहा था कि जो टेस्ट फॉर्म थी वो उन्होंने यहाँ पर भी कंटिन्यू की थी. कल आरसीबी के मुकाबले में श्रेयस अय्यर भी वही फॉर्म, बीच में एक शतक जरूर लगाया रणजी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराशा. और हम बात कर रहे थे बाउंसर्स खेलेंगे, कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी, लेकिन वो ज्यादा परेशानी न झेलते हुए सीधे डक पर ही वापस लौट गए. और वो उनके फेस पर पूरे मैच के दौरान दिखता ही रहा कि वो कितने प्रेशर में है. और मुझे लग रहा है कि गेम में जो उनको दिक्कत झेलनी पड़ रही है उससे ज्यादा वो मेंटल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं. बहुत ज्यादा प्रेशर है. बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम ना आ पाना, उसके अलावा लगातार खराब फॉर्म से जूझना, उसके बाद के क्या जैसे एक बड़ी टीम की जिम्मेदारी, उसके बाद इंजरी से भी वापस आना और इंजरी से लगातार जूझते रहना. श्रेयस अय्यर के लिए कई बहुत बड़ी मुश्किलें हैं जिनसे उनको पार पाना है. और आज के मैच में जिस तरीके से जीत मिली है वो उनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर होगी, क्योंकि अगर हर्षित राणा ना होते तो ये चेहरा और भी मायूस दिखता है आपको. लेकिन ठीक है, यहाँ से मैच बचा के लेके गए. लेकिन वही जो आपने बात शुरुआत में कही थी कि सिर्फ आंद्रे रसेल या सुनील नारायण या कुछ ऐसे प्लेयर्स अगर हर बार आपके लिए मैच नहीं बचाने वाले, तो ये True. बड़ी मुश्किल है. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ बैटिंग में ही वो कमाल करके दिखाया. बॉलिंग में भी जब शुरुआती ओवर्स में केकेआर बहुत स्ट्रगल कर रही थी तो वहां पर रसेल ने ही ब्रेक थ्रू आपको दिलाया. तो आपको दोनों ही डिपार्टमेंट में रसेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. और ये किसी भी टीम के लिए बहुत खराब होता है कि आप किसी एक या दो प्लेयर पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं. आरसीबी को 16 साल से जो ट्रॉफी का सूखा है वो विराट कोहली पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी के कारण है कि आप उनकी बैटिंग पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं. तो केकेआर को इस चीज से बचना चाहिए और अपने मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो स्पेस, वो गैप जो है उसको फिल करना होगा. और सबसे ज्यादा निराश मुझे श्रेयस अय्यर और उससे ज्यादा निराश किया मिचेल स्टार्क ने. जिस तरह के उनके 4 ओवर इतने महंगे गए, Yeah. इतने महंगे प्राइस पर बिकने के बाद, कहीं ना कहीं जो आईपीएल की हिस्ट्री में हमने देखा है कि जो खिलाड़ी पे जिसपे सबसे ज्यादा बड़ा दांव लगा जाता है वो पूरे सीजन में कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा निराश करता है. और उस हिस्ट्री में अपना नाम मुझे लग रहा है आज के मैच को सिर्फ जोड़ा जाए तो मिचेल स्टार्क जोड़ रहे हैं. 4 ओवर में 13 का इकोनॉमी और 19वें ओवर में आपने 26 रन खर्च किए हैं. बहुत मायने रखता है. वही आपसे एक बहुत अनएक्सपीरियंस बॉलर जो हर्षित राणा है, उन्होंने 13 रन बचाए, वहां पर भी 4 रन से जीत दिलाई. और कितना, मतलब सबसे बड़ी बात है हर्षित राणा को देखकर मुझे इसलिए खुशी हुई कि वो लगातार अपनी बॉलिंग में वो चेंज ला रहे थे. कहीं ना कहीं वो अपने पूरे मेंटली उस गेम में प्रेजेंट थे. वो कैसे अपने उनको सफल करना है, किस तरह से बॉल हर बॉल पे चेंज करना है, क्या Yeah. वीकनेस के साथ वो किसी प्लेयर का आउट कर सकते हैं. तो ये देखने वाली बात थी. मुझे लग रहा है कि आज हर्षित राणा से मिचेल स्टार्क को सीखना चाहिए कि वो कैसे उनको 19 ओवर डालना चाहिए. बिल्कुल. नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा. सवाल तो उठाए जाएंगे यहाँ पर अनिमेश, बिल्कुल, क्योंकि जब आप इतना बड़ा अमाउंट एक प्लेयर पे डालते हैं तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस हो. लेकिन जब आप 53 रन देके जाते हैं, 53 लॉट ऑफ रन्स इन अ T20 गेम, तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चंस उठेंगे. बट ताउस थिंकिंग ऑफ हेनरिक क्लासन, मुझे एक लाइन जो याद आ रही है मैच के बाद से वो यही है कि ट्राइड सो हार्ड, गॉट सो फार, बट इन द एंड इट डजंट even matter because he tried everything. He took the game to the last ball, or so to say last over, but at the end it's the result that matters, and it's definitely not in SRH's favor. Now we have a question from Harsh Tiwari, who's asking that Suyer's catch was the game changing moment for KKR. Well, Taus, I would like to know this from you because I think that one run
that Henrik Klassen took, and Shehbaz came on to strike, and Shehbaz got out right after that one run. I think that was the game-changing moment. What do you think? Absolutely, absolutely. I mean, Heinrich Klassen, the way he was looking, he was supposed to take the game away. Heinrich Klassen from Kolkata Knight Riders, and the way he was going about 29 balls, 53 runs with 8 sixes. I mean, that was unimaginable, unbelievable. And I mean, it was a beautiful wicket. So that catch by Surya Sharma and of course Harshit Rana, the way he bowled, he was in complete control. He knew the match is not going in his way, but the way he had his had his things sorted out in the death overs, completely credit goes to the youngsters. Despite Yeah, Mitchell Stark fouling in the last over, I'm happy that a youngster, an Indian youngster, went on to win a game in the death over, because that is one of the crucial moments of the game when if it's a high scoring game, and especially when things are not going great in your favor, especially your captain Shreyas Iyer, he's struggling. Mitchell Stark going for big runs, and then the yeah, wicket which was should have been for spinners, considering you had a Varun Chakravarti, you had a Surya Sharma, you had a Sunil Narine. Should have been for turners. I mean, should have been a slow turner, like how Chennai Super Kings is, and how you saw it in the World Cup when yeah, South Africa played. But surprisingly, it did not go in the favor of home side. So everything going against you, and then suddenly you going out to win a match thanks to a good catch from Surya Sharma and some level-headed bowling from Harshit Rana. Definitely credit goes to these two youngsters. But yeah, yeah, Heinrich Klaasen going after the chase, coming out in a very different way, like how he plays usually, ending up in the losing side. This must be hmm, definitely disappointing for Heinrich Klaasen. But I'm surprised. It was a game for 50 crores guy. I mean, calculate these two guys, Pat Cummins and Mitchell Stark. I'm disappointed with these two guys. 50 crores alone, these two guys have taken away from KKR and SRH. So SRH, it yeah, must be a big, big disappointment for these two guys out there. But yeah, yeah. KKR जीता है. शाहरुख must be happy. Uh, उनके फैंस भी खुश होंगे. मैं भी खुश हूँ. केकेआर का फैन भी थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे केकेआर के लिए, Hmm, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ शाहरुख खान एंड hmm. टीम तो बदलती रहती है वैसे. बट या आई एम हैप्पी विद द Yeah. मैच एट द एंड ऑफ द Hmm. डे. Well, actually, there are two things, that are coming after this match. One, obviously, there will be questions on Mitchell Stark because he has himself put into that questionable arena because he gave away more than 50 runs in the first match itself. So it'll be quite interesting to see how KKR now use Mitchell Stark in the upcoming matches. But on the other side, I was kind of happy with the way Pat Cummins bowled because it was decent bowling, and the way Pat Cummins also did captaincy. Now, Animesh, Pat Cummins, if not with his bowling, I think he has got that captain brain that he can make things work out for SRH. KKR की तो हमने obviously बात कर ली है कि आज आंद्रे रसल ने जिस तरीके से खेला, आपको 200 से ऊपर पहुंचाया, और उस वजह से आप आज जीत भी रहे, बिकॉज 200 प्लस इज अ वेरी वेरी बिग टारगेट, स्पेशली इन सच काइंड ऑफ मैचेस. बट कब तक, ये बड़ा सवाल है, और ये आने वाले मैचेस में शायद आंसर हो सकता है, शायद ना भी मिले आंसर, क्योंकि केकेआर में ये दिक्कत काफी समय से है. एसआरएच की तरफ, what are the issues that you are looking at? And given Pat Cummins, I really felt that it was a decent captaincy and Pat Cummins can change something for SRH. Do you think likewise? टीम उनकी बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं किस तरह की बेंच है, किस तरह का प्लेइंग 11 है, वो विजिबल है बहुत तरीके से कि ये टीम बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ अचीव कर सकती है। और ऐसा नहीं कि ये ऐसा सीजन है कि यहाँ पर उनके दायरे में है चीजें कि वो इतनी बैलेंस साइड दिख रही थी। पिछले कई सीजन से वो बैलेंस साइड दिखती रही है। कहीं ना कहीं वो कमी खली है अभी तक इस टीम को, तो एक लीडर की। अभी मैं मतलब ये अपने अगर अपना व्यू देखूं तो मेरे हिसाब अपने अपने व्यू पॉइंट से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अभी उतना मैं कन्विंस नहीं हो पैट कमिंस की कप्तानी से। ठीक है, एक अच्छा Okay. मैच था। यहाँ पर आपको टोटल इतना ही लगाना था, उसके आसपास लगा, उसके पास अचीव करने की कोशिश की। ठीक है, बहुत
बहुत बड़ा पार स्कोर नहीं था। जब 193 का एवरेज स्कोर है इस मैदान पे, तो कोई 209 210 का टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। Hmm. और आपके Hmm. पास ऐसे गन प्लेयर हैं जो ये अचीव कर सकते हैं। और हेनरिक क्लासन ऐसा नहीं है कि कमिंस की कप्तानी में परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, वो लगातार True, एसआरएच true. के लिए काम करते रहे। कहीं ना कहीं कमी है जो वो एक तरीके से कि वो कलेक्टिव क्विक फायर की वो कहीं ना कहीं नहीं Hmm. हो पाती Hmm. है। और ऐसी क्रंच सिचुएशन में एकदम से कोलैप्स हो जाना, यही दिखाता है एसआरएच की यही कमी है कि वो एक जो ज़ील की कमी मुझे दिखती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि वो बिल्कुल, हाँ। जीत जीत की जो चाहत होती है उसकी कमी कहीं न कहीं दिखने लगती है। हुँ, और हुँ, कहीं न कहीं जो टीम मैनेजमेंट, कप्तान और प्लेयर्स के बीच में जो थोड़ा-सा वो एक कह सकते हैं कि एक बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता है। और वो जब तक बैलेंस क्रिएट होता है तब तक जर्नी कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। और हुँ, सनराइजर्स हैदराबाद की मेरे हिसाब से वही दिक्कत रही है। अभी ये सीज़न कैसा जाता है, पहला मैच मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन पिछले जितने सीज़न गए उससे बहुत अच्छी स्थिति में है अभी एसआरएच। और यहाँ से हुँ, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है तो वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में है। और आज की जैसी पिच थी वहाँ पर बहुत ख़ास मदद नहीं थी किसी भी बॉलर के लिए। और टी20 फॉर्मेट में बहुत मदद मिलती भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा-सा और काम हो सकता है, थोड़ी-सी और चीज़ें बदली जा सकती हैं। और कुछ हुँ, पॉइंट्स हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है सनराइज़र्स हैदराबाद को। और वहाँ पर अगर वो काम करेंगे तो चीज़ें उनके लिए बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल, स्पेशली द I think बॉलिंग I फ्रंट, यू नो। think हाँ, it's हुँ, a start that they have gone. These guys, Abhishek Sharma, he's got such a beautiful start. If he continued the same way, or maybe after a good start, they could capitalize on it, take their team yeah, home, or maybe depend too much dependence again on a foreign player like a Heinrich Klassen is dangerous. Like how Andre Russell plays that role. These guys have good. The better part about these guys, Sunrisers Hyderabad, that they have a good, decent youngsters. They can start well. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो फिनिश करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, आपको वो आगे बढ़ाने, वो स्टार्ट्स को, शुरुआत को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मुझे लगता है वो कमी मुझे लगता है फ्यूचर में अभी दिखने वाली है। यू हैव अ राहुल त्रिपाठी, टैलेंटेड राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, ही इज ट्रू, अग्रेसिव, बट देन यू हैव टू बी अ बिट कैलकुलेटिव। देन Abdul Samad is, I mean, I don't know what's his role exactly. Does he know what's his role? Does he need to finish the game, or he has to play that anchor in the middle of the? You can't have an anchor. You have to be, very on the toes, on the ball, play up to the situation. Just go out there, attack whenever it is needed. I mean, you can't completely depend on Henrik हुँ, Klassen to twist the ट्रू, game completely, because अगर Henrik Klassen का नॉक यहाँ पर नहीं होता, ये कहीं नहीं होते आसपास 200 के। तो every हुँ, time if you depend on Klassen's classy knocks, then I'm sorry, you won't be anyway close to wins, and you would keep on winning on nail biters every time, or maybe outclassed by your opposition. So it's up to these top order batsmen, because आपकी शुरुआत या, चार, एक दो तीन चार पांच से होती है, वहां से आपको कर देना चाहिए। Klassen's role should be like finish the game. That's it. Abdul या। Samad, वहां पर you have been promoted, you have been given the an opportunity, should finish the game instead हुँ। of throwing away a wicket after a good start. Absolutely. And let's quickly have a look at SRH batters, the way they batted. Because Marco Janssen also bats well. But today he didn't get, balls to ball. And it was wise of him to just take one run and give और मैं strike to ऐड करना Henrik चाहूँगा, Klassen. ताऊस भाई ने जो बोला, बिल्कुल मेरे हिसाब से वो स्टार्ट मिल गया था। जो केकेआर की प्रॉब्लम है, कहीं हाँ, न कहीं वो कन्वर्जन नहीं हुआ। और वही एसआरएच की दिक्कत पहले भी रही है और आज भी वही दिक्कत देखने को मिली। और अभिषेक शर्मा ने मेरे हिसाब से अगर 30 प्लस कोई भी टी20 फॉर्मेट में स्कोर करके आपके लिए जा रहा है, वो सफिशिएंट है। उसके आगे का काम आपको करना है। इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है, उसके बाद वो कन्वर्जन आपको लेके आना है। सारी की सारी ज़िम्मेदारी अभिषेक शर्मा या हेनरिक क्लासन की नहीं है। वो ज़िम्मेदारी राहुल त्रिपाठी की है, एडन मार्करम की है, उसके आने वाले अब्दुल हम्म, समद की है। और अब्दुल समद के बारे में जो बात, छठे नंबर के बल्लेबाज को एंकर रोल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपको आना है, बिल्कुल। आपको हिट करना है, आपको हम्म, उसी तरीके से अपने गेम की प्रैक्टिस करनी चाहिए नेट्स में, कि आपको आना है, हम्म, आपको मारना है। आपके कोलैप्स पूरा भी हो जाए तब भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन आपके सामने एक मैच में आएगी। आपके 14 हम्म, मैचों में आपके सामने यही सिचुएशन होगी कि आपको वो गेम फिनिश करना है। आपको ट्रू, एक बड़ा टोटल कहीं न कहीं टाँगना है। तो ये कहीं न कहीं हर प्लेयर को अपना रोल समझना होगा। और अभी तक वही कह रहा हूँ ना कि वो बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पाता है। कुछ क्विक फायर्स आते हैं, लेकिन बाकी वो एक कलेक्टिव क्विक फायर जिसकी नीड है एसआरएच को, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। और हमारे बैकएंड पे प्रोड्यूसर जो अभी प्रीव्यू में भी कह रहे थे कि इस टीम मैनेजमेंट के साथ सबसे बड़ा इश्यू है कि लीडर कुछ चाहता है, टीम मैनेजमेंट कुछ और चाहता है। और आज आपको साउथ अफ्रीकन प्लेयर से सजी हुई है एसआरएच की टीम दिख रही है और ऑस्ट्रेलियन कप्तान है।
तो आप समझ सकते हैं कि पलड़ा किस ओर जाएगा, कि कहीं ना कहीं चाहत पैट कमिंस की कुछ और होगी और टीम मैनेजमेंट की चाहत कुछ और दिख रही है, और वो काम नहीं किया है अभी एसआरएच के लिए आज के मैच में। Yeah. फाइटिंग Yeah. फाइटिंग स्पिरिट जरूर दिखी है, लेकिन वो काम नहीं किया। Yeah. And Pat Cummins is a very cool captain. Whenever we hear him after the match, he is very cool and calm. He doesn't say much about the game today as well. He didn't talk much about the loopholes that SRH had. He just talked about, how well they performed, how Klassen performed, and, how his bowlers were bowling. But it's a problem that SRH will really need to figure out soon and come back stronger in the upcoming matches in IPL 2024. And as we were talking about, Samad and Shehbaz Ahmed, Shehbaz batted at a strike rate of 320. He smashed 2 sixes, 1 4. Similar is expected from other SRH batters as well, and that's when they'll go ahead. Well, that's that for today. We were just talking about SRH and KKR, where KKR have stolen a really good victory from SRH. It's a 4-run victory for them, but tomorrow it's again a double header. Rajasthan Royals versus Lucknow Super Giants first, and then the big game, Gujarat Titans versus Mumbai Indians. Gujarat Titans former captain is now MI's captain. It's gonna be very, very interesting how GT and MI will face. But for all the details and all the updates, you stay tuned to Cricket Next. Thanks, Taus and Animesh, for joining with me. Thank you so much, everyone. We'll see you tomorrow. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।